Everyone, good evening. Good evening, everyone. I hope you all can hear me and see me clearly. Please write yes in the chat if you can hear me and see me clearly. Good evening. Okay, great. Thanks for the confirmation, guys. I hope आप सबने आज morning session में and yesterday commodity session you must have booked some good profit. That's why we have Harsh sir once again today. He'll be joining us in a minute and then we will start. कल का session काफी ही knowledgeable था. At the same time, we booked some good profits. If I just remember it correctly, just give me a second. हमने इंट्राडे दिया था सिल्वर नवंबर कॉल 9000, बाइंग वाज 290, स्टॉप लॉस वाज 99 एंड हमने पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करने के लिए कहा था एट 450 500, sorry 500 550. We did not hit our target, but we booked a good profit in the commodity trade which we received. And let me just see. And आज सुबह दोपहर के session में we couldn't find any momentum, but in the morning session for Nifty we did find a trade and we booked around 25 points in the morning session. Okay, I just had a word with her, sir. NG 300 touch करेगा जिज्ञासा जी. We will definitely take up your question. We just want we're just waiting 2 more minutes for her sir to join and then we are good to go. Feel free to drop your queries in the chat. We'll be happy to take them up. वर्ल्ड वॉर 3 होगा. अब एनजी क्रूड आई होप वर्ल्ड वॉर ना हो. Everyone should hope for that only because that will be very bad. And Harsh sir से मेरी just अभी बात हुई. He will be joining us in a minute. Expiry view of NG. Amit ji, that's the reason we are here. We'll just wait for Harsh sir and then we'll start. Feel free to drop your queries. Already काफी सारी आ चुकी हैं. One by one we'll take these queries. How many of you are joining in for the first time? Harsha, can you hear me? Yes, Anuj, you are audible. So we are all set. You can share your screen, turn on your camera, and we are good to go.
We can see you, sir. Yes, We Anuj. can hear you. You can start, sir. Yes, so once you complete, we can start in couple of minutes. Good evening, everyone. My name is Anuj Sharma. I am the community manager at Motilal Oswal. Welcome to the Natural Gas Expiry with our expert, Mr. Harsh Doshi. For the people who have attended the yesterday's session, you must have booked a good profit in the silver penny trade which we received. And today we'll be focusing around natural gas. अगर उसमें ज़्यादा momentum नहीं रहा तो we will try to get a good trade in any other commodities, or else we focus solely on our expiry. Also, feel free to drop your queries. We'll be happy to take it up during the session. And अगर time रहा तो we will engage and ask some questions to you as well. So I guess we are all set, her sir. You can share your screen, and then you can start with the quick overview. All right. Okay, Anuj. Thank you. So yes, good evening, everyone. Welcome to the natural gas live expiry session. So जैसे कि हमें मालूम है कि आज हम जुड़े हैं बिकॉज नेचुरल गैस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आज एक्सपायर होगा एंड वी हैव कनेक्टेड to take live expiry trades and gain maximum out of it. So hopefully we make best use of it and I hope कि हमारा कल का सेशन भी काफी प्रॉफिटेबल रहा था. So you guys enjoyed and booked good profits. So today's session also will ensure कि हम learning plus earning दोनों चीज साथ में करें. Meanwhile, I'll share my screen. So your screen is not yet visible. I hope now it is visible. Yes, sir. Okay. So, yes, guys, we'll start with the session now. So, looking at the current chart of natural gas daily chart, you guys must be wondering कि usually हम जो discussion करते हैं उसमें खाली price action होता है. But just to make it more interesting for you guys, yes, today we have come up with some interesting strategy how to trade based on the Bollinger Bands and RSI. So ये सेशन में हम देखेंगे किस तरीके से दोनों चीज को साथ में कंबाइन करके एक सिंक बिठा के तालमेल में कैसे हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंटर कर सकते हैं विथ ह्यूज प्रॉफिट्स. सो हमारे सामने अभी नेचुरल गैस का डेली चार्ट है. सो लुकिंग एट द सेटअप बिफोर स्टार्टिंग विद बॉलिंजर बैंड्स, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस दैट Bollinger Band is invented and created by Mr. John Bollinger, and he has contributed a lot in the field of technical analysis. So एक सबका नजरिया होता है चार्ट देखने का. It is subjective and it is never same for everyone. तो कोई प्राइस देखते हैं, कोई इंडिकेटर्स देखते हैं, कोई वॉल्यूम देखते हैं. तो उनका भी जो नजरिया था एक चार्ट की तरफ देखने का वो काफी लोग से सबसे अलग था. According to him, rather than only looking at prices, it is important कि कैसे हम ये प्राइस को एक बैंड में फिट करके देखें. सो हमारे सामने हम देख रहे हैं कि अपर बैंड है जो कि ग्रीन कलर का है. मिडिल लाइन जो है वो एवरेज लाइन है. हमारा 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज है. So because it is a daily chart, it will be 20 days simple moving average, and lower band is our red line. So this is for sell signal and the green band is for buy signal. So we will understand that how only based on smart signals with the help of RSI and Bollinger Band we could enter the profitable trades in fact. So हम देख सकते हैं कि NG में
करीब करीब अराउंड इन द मंथ ऑफ मे दिस ईयर एक स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल इनिशिएट हुआ था। बैंड में एक ब्यूटी ये है कि अगर इसका अपर बैंड के ऊपर क्लोज होता है प्राइस, गोइंग फॉरवर्ड जो है अपसाइड कंटिन्यू करता है, बिकॉज प्राइसेस जो अपर बैंड को है वो स्टिक करके ऊपर चलते हैं। वी कैन सी कि कैसे चिपक के ऊपर जा रहा है। एंड देन आफ्टर टेकिंग द ट्रेड यू गाइस वुड बी सरप्राइज दैट ये इवेंचुअली ये इनिशियली 31% का रिटर्न देते हुए चला एंड इवेंचुअली समवेयर अराउंड हमने इसमें देखा कि 42% का रिटर्न था। सो ओवरऑल अगर इसमें हम बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी भी अडॉप्ट करते हैं, इट इज वेरी यूजफुल। अनदर थिंग वाज दैट ये बैंड जो है वो एक्सपेंशन जोन में, यूजुअली बॉलिंजर बैंड में दो चीजें होती है, एक तो एक्सपेंशन एंड दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन। सो ड्यूरिंग एक्सपेंशन इट इंडिकेट्स कि अभी जो आगे चलते मूव रहेगा वो ट्रेंडी रहेगा, सो इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू प्ले द मूव। एंड उसके बाद अगर हम देखें कि देयर वाज अ टाइम पीरियड बिटवीन जुलाई टू सितंबर दैट इट वाज ट्रेडिंग इन द ब्रॉड रेंज, जहाँ पे मूव था वो एकदम साइडवेज और रेंज बाउंड था। यहाँ पे चलते बैंड्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, जो इंडिकेट करता है कि अभी के लिए इट इज इन नो ट्रेडिंग जोन बिकॉज इट इज स्टक इन द ब्रॉडर रेंज। सो इट इज एडवाइसेबल दैट नॉट टू टेक एनी ट्रेड्स, बिकॉज यहाँ पे जो सिग्नल्स है वो काफी मिसलीडिंग है। हम देख सकते हैं कि ऑल्दो रेंज बैंड के ऊपर गया, फिर भी प्राइसेस जो है वो फिर से रिवर्स होके नीचे के लेवल टेस्ट करने हैं एंड देन एक साइडवेज जोन में वो स्टक हो गया। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि ट्रेंड सपोर्ट कर रहा है कि नहीं मूव को, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ द बैंड इज इक्वली इम्पोर्टेंट। सो एक हमने अच्छा मूव देखा तो हमारा एंट्री पॉइंट ये लेवल पे आ रहा था समवेयर अराउंड 185 190 ऑड लेवल, और हमने एक अच्छा मूव देखा अपसाइड में 260 तक, विच इज 50-60 रुपीज ऑड मूव एंड अराउंड 40 to 45%। और इसके साथ साथ अगर हम आरएसआई भी ब्लेंड करते हैं तो हमें एक डबल कंफर्मेशन मिलता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि व्हेन आरएसआई वाज आल्सो इन द ओवरबॉट टेरिटरी 70 के जोन में रहा है, एंड देन वंस इट स्टेज अबव 70 ओवरबॉट जोन ऑफ 70, the prices accelerate with pace on the higher side, which is pretty evident on the price action itself. Because कैसा है ना friends, it is misconception that when RSI is in overbought zone, जैसे अगर 70 टच करता है तो सेल करना है, एंड ओवरसोल्ड जोन 30 का अगर टच करता है तो बाय करना है। बट इन रियलिटी मार्केट में ये चीज जो है वो काफी कम देखने मिलती है। इनफैक्ट अगर वो ओवरबॉट जोन एंटर करता है और अगर वहीं पे हवर करता है और उसके ऊपर अगर स्टे करता है तो एक्सेलरेटिंग मूव्स देखने मिलते हैं, जो कि हम एक्चुअली भी देख रहे हैं। वी कैन सी दैट हाउ Bollinger Band is giving a buy signal and then RSI is also supporting that with confirmation. So यहाँ पे जो है हमारा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इस ट्रेड को लेने में बाय साइड। Same goes here. We saw that couple of months back at 215-16 odd level, we got buy signal. RSI was also in the overbought zone, and then we saw कि एक 216 वाला काउंटर 254 हो गया। अगेन हैंडसम रिटर्न्स, रफली 35-40 ऑड रुपीस का मूव देखने मिला, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये स्ट्रैटेजी अगेन आरएसआई के साथ अगर हमें ब्लेंड करनी है, वी कैन सी कि जैसे आरएसआई ओवरबॉट टेरिटरी क्रॉस करता है एंड बैंड के ऊपर भी जब ये प्राइस निकलता है एक कोइंसाइड हो रहा है डबल कंफर्मेशन के साथ, अच्छा मूव भी देखने मिल रहा है। So this was about with the help of Bollinger Band and RSI how we can trade in volatile counters. So this was daily chart in natural gas. Because we are discussing about RSI, थोड़ा RSI के बारे में introduction दे देता हूँ. It is invented and created by Wells Wilder.
It is used as famously as overbought oversold indicator. इसमें हमने I think yesterday session में divergence भी देखा. So RSI works well in divergence, catching divergences also, whether it is positive divergence or negative divergence. It works out and plays out very well. तो ये था RSI का usage and Bollinger Bands का. Now moving to intraday chart. ये स्ट्रैटेजी अगर हम 60 मिनट्स के चार्ट में भी अडॉप्ट करें तो भी अगर आज के दिन हम देखें बहुत अच्छी तरीके से प्ले आउट हुआ. इफ टुडे आल्सो वी वुड हैव टेकन द ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड around 263 264 after the open, we can see that it has given a strong run up of somewhere around 15 rupees, which is roughly more than 5% only for the day. So this is how the strategy is impactful. अगर अभी भी हम देखें आगे चलते, ये बाय जोन में ही है. दैट वाज आर्ली चार्ट. सो अभी भी ये जो है बाय जोन में ही है, बट नॉट पुशिंग द ट्रेड राइट नाउ. आई एम वेटिंग फॉर मोमेंटम टू प्ले आउट. बट हैप्पी टू शेयर कि एज पर यस्टरडेज डिस्कशन जो हमारा 275 का लेवल था, जो टारगेट था ऊपर में, वो आज ऑलरेडी अचीव कर चुका है. इट हैज बीन मेट एंड वी हैव सीन द फॉलो अप बाय and making the highs of 289 recently only. So as such एक बहुत अच्छा रन अप आ चुका है. and throughout the day we have been on the buy side and we have generated lot of trading calls in profit. अभी भी एक स्लाइट डिप के लिए हम वेट करेंगे कहाँ पे एक अच्छा एंट्री मिल सकता है हमें. So this was the overall technical perspective in natural gas. आज एक इम्पोर्टेंट चीज है, नेचुरल गैस का जो है डेटा भी है, जहाँ पे नेचुरल गैस का स्टोरेज आने वाला है. सो इट इज प्रीवियसली इट वाज 42 बिलियन. लेट्स से अगर ये डेटा 42 बिलियन से कम आता है, अराउंड 35, इन बिटवीन 35 to 40, अगेन ये प्राइसेस के लिए जो है इसका इम्पैक्ट जो पॉजिटिव रहेगा. एंड इफ इट इज हायर तो देयर आर चांसेस कि जो गेन्स हमें देखने मिले हैं वो स्लाइटली एक करेक्टिव जोन में करेक्टिव फॉल देखने मिले और थोड़ा एक कॉन्ट्रा मूव है. बट एज सच ऐसा कोई सिग्नल नहीं आया. टेक्निकली अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है. इट इज स्टिल इन द बाय जोन. वी विल वेट फॉर फर्दर प्राइस एक्शन. बट ये हमने बात की डेटा के बारे में, तो डेफिनेटली 9 बजे जब ये डेटा आएगा, we'll see that prices will move with high pace on either side. एकदम massive fluctuation देखने मिलेगा. So be prepared for that volatility because आज expiry day भी है. So it is like to trade with caution, but if we are on the right side, then nothing like it. So do we have any strike on radar? Yes, Anuj. So overall, the view is bullish and the bias is positive, but waiting for some good moves for the trade to enter. Meanwhile, if there are any questions, we can definitely take. Sir, it will be great if you can give a quick overview of other important commodities. Can I know if there is any in chat box कोई specific commodity के बारे में किसी को कुछ पूछना है? I can see gold, crude, and rest are around NG. Okay, so we'll start with gold. So same guys, ये same strategy gold के weekly chart में भी try करके देखा है, and this is back tested and live tested, and the history says that it has been doing very well. Natural gas में भी हमने देखा कि किस तरीके से ये strategy play out हो रही थी, and we have seen some good and handsome returns. ये same strategy हम adopt करेंगे अभी gold में भी,
but on the weekly chart. So regardless of the time frame, we can definitely use this on the intraday chart, weekly chart, and daily chart also. But it all depends upon our financial goal, कितना हमें return expect कर रहे हैं, कितने टाइम हम रुकना चाहते हैं, एंड उसके अलावा क्या हमारा पोजीशन साइजिंग होना चाहिए, क्या हमारा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए. सो विल सी दैट ये स्ट्रैटेजी गोल्ड में किस तरीके से वर्क करता है. सो लुकिंग एट द गोल्ड वीकली चार्ट, आई थिंक इन द लास्ट ईयर ओनली अक्टूबर महीने में फर्स्ट टाइम प्राइस जो है बैंड के ऊपर ट्रेड करना शुरू किए थे, एंड उसके बाद we have seen कि किस तरीके से at least for 6 to 7 months it was trading consistently above our average line of 20 period simple moving average. and ये move जो हमने capture किया है, it was roughly 20 to 25% move हमने capture किया within less than 6 months, roughly 6 months के period में हमने move capture किया. And because of the trending moves, it has been supportive and very helpful. तो अगर यहाँ पे किसी ने एंटर भी किया हो ट्रेड में, एंड वी कैन सी कि एवरेज लाइन के नीचे प्राइस एक बार ट्रेड किया था बट होल्ड नहीं किया था, तो अगर हम वेट करते हैं कि एवरेज लाइन के नीचे अगर क्लोज आता है तो ही हम एग्जिट करेंगे. अगर वो भी हम स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं सिंपल सा, वो भी हमें 20-25% रिटर्न दिया है स्ट्रैटेजी ने. सो विद द हेल्प ऑफ आरएसआई अगेन सेकंड सिग्नल हमें मार्च महीने में मिला. वी कैन सी कि यहाँ पे तो जैसे कि हमने अभी जस्ट देखा कि आरएसआई अगर कोइंसाइड होता है तो डबल. Sir, actually there is a lot of disturbance from your side. Yes, actually, because market is extremely volatile and price action is pretty quick, so पूरा माहौल बना हुआ है मार्केट में. सो मतलब वही है कि कभी कभी if we wait for the right setup and right structure and things work in our favor, तो सेलिब्रेट भी करना जरूरी है उसको. Correct. Yeah. ठीक है. So coming back again to our the strategy, once it coincided with RSI, we have seen the next leg of fresh rally. यहाँ पे फिर से दोबारा 66, 200, 300 और लेवल पे बाय देने के बाद, सिग्नल देने के बाद प्राइस 73,000 टेस्ट किया, which is somewhere around 6 to 7,000 rupees. सो वही है कि ये चलता काफी अच्छा है, बट थोड़ा जो सिग्नल्स है इसमें कम मिलते हैं, बट काफी एक्शनेबल है. हमने देखा किस तरीके से वो मिसलीड नहीं करता, बिकॉज बैंड्स जब एक्सपैंड हो रहे तो हमें वो ध्यान में रखना है. सो हमने काफी सारी चीजें देखी किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ प्योरली टेक्निकल्स वी कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स एंड improve our trading journey. सेमली अगर हम आगे भी चले तो जैसे कि हम बार बार देखते कि कैसे पॉजिटिव डाइवर्जेंस और नेगेटिव डाइवर्जेंस जो आरएसआई में होता है वो हमें कैसे हेल्प करे. सो हम देख सकते हैं कि सीरीज ऑफ नेगेटिव डाइवर्जेंस जब हुआ, wherein prices did make new high, but RSI is not confirming the new high. RSI is making new low, and gold में एक contrary sharp fall देखने मिला, एक corrective fall आया strong. However, because the trend is still strong, overall रहना buy में ही है, but ये इस तरीके से हमें एक caution करता है कि अगर अभी हम clear long में है, all in long में, तो at least we should start booking profits. तो एग्जिट के लिए ये स्ट्रैटेजी काफी अच्छी तरीके से वर्क करती है कि कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, कब करना चाहिए. सो नाउ लुकिंग एट द करंट मूवमेंट, ओवरऑल हैप्पी टू शेयर कि कल जो हमारा व्यू था कि 75,800 के ऊपर 76,300 टेस्ट करना आ सकता है. इनफैक्ट इट डिड टेस्ट एंड प्राइजेस continuously ran up and made a high of 76,700.
सो हमने फिर एक दिन में रफली 500-700 और रुपीस का व्यू बना था, बट एक्चुअली प्राइस ने जो है करीब करीब 800 से 900 रुपए का राइस दिया है। सो गोल्ड में अगर आगे चलते 76 890 76 900 का जो लेवल है वो क्रूशियल रहेगा टू वॉच आउट फॉर, दैट कुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस नाउ, बट एज पर डिस्कशन yesterday ऑल्सो कि गोल्ड सिल्वर दोनों ही जो है वो रिकवरी मोड में है, और ये रिकवरी काफी अच्छे से प्ले आउट हो रही है, काफी अच्छा मूव देखने मिला है, एक्सपेक्टिंग कि ये रिकवरी आगे चल के भी कंटिन्यू करे। तो 76,900 रेजिस्टेंस रहेगा, और अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसमें 76,200 का रहेगा। एज लॉन्ग एज प्राइसेस इज होल्डिंग वेल अबव 76,200 300 लेवल, 76,900 ऑन द अपसाइड लुक्स अचीवेबल। तो बाइंग ऑन डिप्स करना है गोल्ड में। सो ये आज का हमारा थोड़ा लर्निंग वाला सेशन था। अभी थोड़ा बॉलिंजर बैंड से हटके if we come out with moving average strategy and see कि अगर कोई ट्रेड निकल रहा है, I think someone was asking regarding crude also. Looking at the chart of crude oil, 5880 का जो लेवल था ना, that was acting as a strong resistance. If we look at the crude oil hourly chart also, earlier that was acting as a strong resistance, and finally जब वो 5,920-30 का लेवल ब्रेक किया आज, अपसाइड में 5960 और लेवल टेस्ट किया, 30-40 रुपीस का मूव इंट्राडे चार्ट में प्ले आउट हुआ। However, right now, I think as such, we'll still wait for the convincing move. Like movement आने दो, but overall buy में ही है। Any dip towards 58,95,900 level could be potentially good entry point. ऊपर में टारगेट रहेगा 5970 से 6000 का लेवल, तो ये चीज ध्यान में रख सकते हैं। और इन केस अगर आज का हाई ब्रेक करे तो भी ये ट्रेड ले सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 6000 इन क्रूड ऑयल। सो एनीवेज 40-50 रुपीस का मूव विल गेट टू प्ले। सो कमिंग बैक टू नेचुरल गैस अगेन, अर्ली चार्ट में अगर हम देखें कि किस तरीके से थोड़ा 290 का जो रेजिस्टेंस है 89 का, वहाँ वो लेवल को रिस्पेक्ट करके 84-85 लेवल के आसपास फिर से आया हुआ। इट इज स्टिल इन द बाय जोन ओनली, बट वुड लाइक टू see whether prices are now ready to move on the upside, because see guys, when the chart is extremely stretched, तो कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा एक करेक्टिव फॉल है। सो आई बिलीव दैट वो खेलना भी गलत नहीं है, बट दैट फॉल हैज टू बी वेरी मच एविडेंट। तो अभी हमने देखा कि एक माइनर हल्का सा फॉल है, विल वेट फॉर द क्लोज। आई थिंक इट हैज क्लोज्ड, एंड अभी जो है एक नैरो रेंज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 84 का। अगर 84 के नीचे अगर ब्रेक करता है प्राइसेस, तो अनदर एक क्विक 3-4 रुपए का फॉल देखने मिल सकता है टुवर्ड्स 280-281, बट एज सच अभी भी स्टिल एकदम क्लैरिटी नहीं आ रहा है। आई एम वेटिंग फॉर द क्लैरिटी। तब तक वी कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट आवर पाथफाइंडर रिपोर्ट, जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे। आई होप इट इज विजिबल, अनुज। Yes, it is visible.
Yes, guys. Guys, So please note that being patient is very important. कल भी हमने last moment पे trade दिया था जिसमें हमने profit book किया. I know everyone is waiting for the trade, but we'll try to give it at the right moment. yes. So yesterday only we were discussing about this report. So I'm happy to share कि इसमें जो हमारा view था 262 का हमारा Sir, level. natural gas का chart visible है. Okay, hold on. Is the report visible now? No, natural gas future MCX. Hold on. I believe now it is visible, right? Yes, sir. Yes. So yes, guys, we saw कि हमारा जो व्यू था 262 के लेवल पे टेस्ट करने का वो ऑलरेडी कल ओपन में ही प्ले आउट हो गया एंड वेरी स्ट्रॉन्ग रन अप. Sir, I don't know why, but your screen turned blank, white blank. Can you stop your screen share and try once again? Yes, I'll reshare Anush. So is it visible now, Anuj? Yeah, we can see now. ओके सो वही हमने कल देखा कि किस तरीके से एक ट्रायंगुलर पैटर्न जो है वीकली चार्ट में वो ब्रेक हुआ है फाइनली एंड एक अच्छा मूव आई थिंक 1 या 2 दिन में ही देखने मिल गया. सो आज का दिन इंपॉर्टेंट है बिकॉज डेटा भी है तो मे बी एक हल्का सा एक करेक्टिव मूव इनकेस आए एंड अगर नीचे में कुछ अच्छा एंट्री मिले सो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर सेकंड पाथफाइंडर रिपोर्ट आल्सो. It will be natural gas 2.0 piercing rise. So hopefully, if overall macro stages and technically things are supportive, we'll definitely come with second report also, and we'll discuss about that as well. So इस तरीके से हमारा जो पाथफाइंडर रिपोर्ट है वो हम पब्लिश करते हैं रिलीज करते हैं which is mix of both fundamental as well as technical, wherein you can see कि why फंडामेंटली क्या चीजें हैं जो प्ले आउट हो रही है और क्या सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है सपोर्टिंग द राइज इन द प्राइसेस. तो ये हमारा एक समराइज फॉर्मेट है जिसमें हम कन्वे करते हैं कि एक शॉर्ट टर्म में क्या लग रहा है एंड ऑल द फंडामेंटल रीजंस दैट व्हाई इट इज पॉजिटिव फॉलोड बाय टेक्निकल रीजंस. सो व्यू जो है ये एक तालमेल के साथ सिंक में ही चलता है and then only we take the bet so that it is beneficial for all traders, investors, and it possibly plays out also well when there is double confirmation. Okay guys, so coming back to natural gas, I think एक strong run up के बाद एक अच्छा bearish reversal हमें देखने मिला नेचुरल गैस में फॉलोड बाय अ लोअर क्लोज. तो आज हम जो है कॉन्ट्रा बेट लेंगे नेचुरल गैस में. स्ट्राइक टू फोकस फॉर नाउ वुड बी 280. बिकॉज वी कैन सी कि यहाँ पे किस तरीके से एक डाइवर्जेंस भी प्ले आउट हुआ है आरएसआई में, जहाँ पे आरएसआई थोड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं कि अपसाइड में मोमेंटम में पॉज लग सकता है. So guys, would like to initiate the trade. This trade is for the downside. थोड़ा एक करेक्टिव मूव देखने मिल सकता है नीचे की तरफ. टेस्टिंग 280, 81 ऑड लेवल ऑन द लोअर साइड. तो अभी हमारा फोकस जो है वो 280 के स्ट्राइक में रहेगा. बाय नेचुरल गैस 280 पुट at 2.40. Stop would be at 1.30 with the target of 4.10.
आई वुड लाइक टू रिपीट, यहाँ से एक 280-81 लेवल तक फॉल एक्सपेक्टेड है. सो हम एक काउंटर मूव प्ले आउट करेंगे आज. जनरली वी हैव बीन विद द ट्रेंड, बट करंटली देयर आर साइंस की थोड़ा एक है जो डाउन साइड का मूव है, वो भी खेलने मिल सकता है. सो बाय नेचुरल गैस 280 पुट 2.40, stop loss 1.30 with a target of 4.10. Guys, we are not sharing the screen right now, but we are sharing the trade. I'm just repeating. Natural gas 280 put, buy near 2.40, stop loss 1.30, target 4.10. Harsh sir, I hope the trade was correct. Yes, Anuj. I'll repeat once again. Natural gas 280 put, buy at 2.40, stop loss 1.30, target 4.10. Perfect. So I think आज के लिए ये ट्रेड पे हम फोकस रख सकते हैं. नॉट पुशिंग फर्दर मोर ट्रेड्स बिकॉज एनजी में जो है एकदम एक्शनेबल लग रहा है और मूवमेंट भी है. सो आई वुड सजेस्ट कि यू नो एनजी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस रखो, इसमें ध्यान दो. एंड डेफिनेटली you know we can expect the fall towards 280, and if there is any change in view, would update to you, Anuj. For now डाउनसाइड के लिए बिल्कुल ये ट्रेड लेना चाहिए. सो आज Got it, sir. दिस वाज इट. So till when should we keep a track and hold this trade? ये ट्रेड जो है 10 से लेके 10:30 के बीच तक, 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक एक्टिव है. बिकॉज कैसा है ना कि अगर साइडवेज हो जाता है तो प्रीमियम्स जो है उसका वो डाइल्यूट हो जाएगा. सो आई वुड सजेस्ट कि एक बार के लिए ये ट्रेड जो है वो आइदर टारगेट स्टॉप और द टाइम व्हिचएवर इज अर्लियर, अकॉर्डिंगली तब तक वेट कर सकते हैं. एंड इफ देयर इज एनी अर्ली एग्जिट और सो आई विल अपडेट यू, एंड इफ देयर इज एनी बुक प्रॉफिट आल्सो आई विल अपडेट. सो इसमें वही है कि हमने टारगेट 4.10 का रखा है, बट इसमें हम पार्शियल बुकिंग 3.40 से 3.50 के बीच में कर सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट्स बुक. और जो हमारा कॉस्ट है उसमें ट्रेल कर देंगे फॉर रिमेनिंग पोजीशंस. एंड डिपेंडिंग अपॉन यू नो इंडिविजुअल चॉइस, किसी को बुक फुल प्रॉफिट करना है तो भी 1:1 में कर सकते हैं, और किसी को अगर ओपन रखना है तो दूसरे टारगेट के लिए भी ओपन रह सकते हैं. Got it, sir. So guys, this was the last minute trade just like yesterday. Let's hope कि कल की तरह we book another good profit. So that will be all for the day. Thanks a lot, Harsh sir. I guess team की excitement की तरह हमारे members भी excited हो जाए after this trade. That is what I'm expecting. See you again soon for another commodity trade and probably another knowledge session. And it was great to have you sharing all the knowledge with us. Thank you everyone. Okay, Anuj. Thank you. Thank you everyone for joining.